Dear friends, you are welcome in this lecture. Good evening to you. I'm very happy to be with you again. And I continue with the topic evaluation of soil fertility. We know why we are evaluating soil fertility. This is mainly to supply nutrients, to the plants for optimum growth. We want optimum growth or good growth of the plants or crops for getting more profit. Farmers are interested in earning more profit from the farming. That is basic purpose. And second purpose of soil testing can be to see the nutrient balances. Sometimes one nutrient can be in excess, sometimes other can be in deficiency. So there are some important purposes of soil testing that I have discussed yesterday. And just to refresh your memory, you can see the purposes are to diagnose suspected nutrient imbalances, monitor effect of management on crop nutrient status. Sometimes we have variety of management practices. Management practices like our cultural practices particularly, or our, for example, seed rate, weed control, tillage is very important that can affect the fertility of the soil. So all these crop rotations, etc. We want to study the differences on soil fertility from these management practices. And also it provides basis for recommendation of fertilizers for improving crop yield and quality, improving fertilizer use efficiency, decreasing impact on water, etc. etc. So there are some purposes of doing soil fertility evaluation, and there are different methods or approaches. I discussed visual plant diagnosis, then plant analysis. There are two types. One is rapid tissue qualitative test and quantitative test, that is total analysis of nutrients. And total analysis of nutrient is interpreted. Suppose we have done analysis of nutrients, analysis of N, P, K, and other nutrients. Now, what does it mean? We must be getting some results from chemical analysis. Now, our purpose is to interpret these results. And these results can be interpreted by three approaches. One is critical concentration of nutrients in plant tissues. Other is dredge system and chlorophyll meters. These three I will discuss in detail, what is meant by them. And then next is soil testing that I will discuss today, soil testing. In this, there are certain steps. The first step is sampling. Second step is sampling and processing. And then extraction of nutrients, and then interpretation of the results, soil test results. So there are three parts of soil testing. Then microbiological methods. These are not adopted by soil testing laboratories. So it is just obsolete. It has become obsolete, but just as a method, it was used by people. But now, no more it is used now. Remote sensing is also there. We will discuss it now. And then field experiments. So field experiments are the most reliable approach, is the most reliable approach for soil fertility evaluation, because ultimate ultimate objective is to grow the crop, to grow the plants successfully. If your soil is producing good plants, then it is having better fertility. Otherwise, it is not. Because many times we get confused that soil fertility and soil productivity are different. We have a lot of discussion on this subject, but I did a lot of analysis of this, and finally I found there is hardly any difference in soil fertility and soil productivity. So unnecessarily, people are creating big hype around this subject of soil fertility and soil productivity. A fertile soil is going to be productive. Then field experiments we can do from two perspectives. One is control test plot, like we do in demonstration and research projects, and complex experiment. I'll go in detail about all these. So yesterday you have seen visual diagnosis. Through deficiency symptoms, we can evaluate fertility, but it gives us very rough estimate, rough idea about the nutrient deficiencies or sufficiencies. Even plant chemical analysis, of course, it can give us idea, but it will not guide us how much nutrient should be applied to the plants. So, but it has got two methods. One is rapid tissue test, qualitative test I discussed yesterday for nitrogen
And phosphorus, I think I discussed. For nitrogen, how to do it. And then for phosphorus and color development was there. And then total analysis of plant. This is quantitative approach. And in this, there are 4 parts or 4 steps, you can say. Plant sampling. Careful plant sampling is necessary. Then sample should be processed, processing of the sample, and then analysis, and then interpretation. So plant sampling, we know that we have to go to the plant, to the fields, or to the place where our plants are growing. And then we take the samples. Samples are taken as per need. Sometimes we may need leaf sample only, sometimes whole plant samples, sometimes root samples. So this depends upon objective of the study, what we want to study. Do we want to study nutrient uptake? Then we will take the whole biomass, above ground biomass, whole shoot can be taken. If it is at harvest stage, we can take grains and straw separately. So it depends. And then processing of the sample is done, sample preparation. So in this case, often we go for drying of the samples in the oven. We can dry samples, and then we can go for grinding of the samples. And after that, sieving is also required. And then we can go for analysis. In analysis, we need to extract the nutrients. We extract the nutrients, and we need to destroy the organic matter. Organic matter is to be destroyed, that is carbon, hydrogen, oxygen, and then minerals are left in the juice or in the extract. And then we quantitatively determine them by different methods. And then after getting the results of plant analysis, we go for interpretation. Interpretation, I told that it can be done through 3 different approaches: critical concentration of nutrients, nutrient ratios, and chlorophyll meters. So after analyzing the nutrient concentration, it is desirable to go for interpretation. Now, in detail, we can see how we can go for plant sampling. So sampling done from the specific plant parts at a specific growth stage, most closely associated with critical values. So what people have done, depending upon the growth stages, they have decided that this particular growth stage is more sensitive to this particular nutrient stress. For example, take case of zinc. Crop is more sensitive to zinc during tilling stage. At early stage, there should not be deficiency of zinc. But if it comes at later stage, plant can bear it. So certain stages of the crops or plants are very sensitive to deficiency. If there is little deficiency, there will be more reduction in the growth. But at other stages, if some stress is there, there will be less reduction in the growth. So growth stage where you get maximum reduction in the dry matter or yield, that is actually critical growth stage. In case of nitrogen, for example, we know tilling is important. Tilling cannot happen in cereal crops if we lack oxygen, if deficiency is there. And also the next important stage is panicle initiation stage. So there should not be deficiency at panicle initiation stage in rice or many other cereals. So some people do testing only on critical stages, but otherwise it depends on the person's interest. Then what we can do, we can take a composite sample of about 200 to 500 gram fresh weight. So this is fresh weight, and it may have 40-50% or more moisture, and then we can dry it. Oven drying can be done. So then after taking the sample, we need to wash it from the distilled water. There may be a lot of dirt or dust or some undesirable foreign material that should be cleaned by the distilled water, and then we can dry it under the sun for a few hours. And then after the wetness of the material is removed, we can put it in the oven till we get the constant weight. So it can be 65 to 70 degrees centigrade temperature. Normally, maybe within 12 hours, I think the sample will dry. Then we can take it out, and there should not be any contamination during this process. And then we can go for grinding. Grinding machines are available. Then chemical analysis. Once the sample is ready,
So we can go for ashing. I think we were discussing last time, dry ashing and wet ashing. I can recall. Yes, sir, we discussed. Yeah, it was discussed. So just I wanted to start from little back. So dry and wet ashing is there. So in this case, normally in laboratories now people adopt this wet ashing process where acids digest the material. Digestion of material here means oxidation of carbon, basically. So carbon is oxidized or carbon is burnt by the acids, and we get the other nutrients or ashes in the mineral form or in the solution form. And then we determine the nutrients, and nutrients concentration is expressed in percentage, milligram per kg, microgram per kg, milligram per gram, microgram per gram, and different units are there, depending upon the nutrients. Suppose we have macronutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. They are expressed in percentages. And these micronutrients are represented in microgram per gram or milligram per kg. So these are the units of expression. Now, suppose we have analyzed the nutrients in the samples of interest, any specific part of the plant is used, number one. Number two, it is analyzed at a specific growth stage. We need to mention the specific growth stage and plant part which was used for analysis. These two aspects are important, because if you want to match your results with previous work with other people, then we need to keep certain symmetry in our observations or our methods. So interpretation based on total concentration of nutrients in dry matter of plant parts, which are compared with standard values or critical values, are available and grouped into supply classes. So we can group into supply classes, mainly two classes: sufficient or insufficient, or under optimal supply or deficient supply. This determines whether immediate action is needed to correct the deficiency. So if we do it in real time, analysis is done in real time. So suppose we took sample today and tomorrow we are able to analyze it, and we found that this particular plant is having deficiency of phosphorus or nitrogen or potash, whatever is there, then we can take some corrective measures. It can guide us to apply nutrients. At least farmer or people must realize that your crop is suffering from deficiency of a particular nutrient. ये पता लग जाता है. Then, of course, this will not help us to decide the exact amount of nutrients to be supplied. But at least if it is not guiding, then previous recommendations can be used. So conclusions can be drawn on whether the amount of fertilizer applied at sowing was sufficient or should it be increased to the next crop. Particularly when we do it in early stages, vegetative growth stages, if we can analyze the concentration of nutrients, then we can see whether the basal dose which was applied, was it sufficient up to this stage or not? Do we need to increase basal dose also? Normally 50% nitrogen is given as basal dose, but sometimes 75% is also recommended. So this interpretation, suppose by now we know the concentration of different nutrients in different plant parts or in some plant parts. Now how to interpret it? So interpretation is done by critical concentration, by nutrient ratios. Nutrient ratio is also called as DRIS, D-R-I-S. Then chlorophyll meters and leaf color charts can also tell us indirectly status of the nutrients. Means concentration. They are also correlated to the concentration of the nutrient. So let us see how critical concentration of nutrients will help us to understand the deficiency or sufficiency or toxicity of a nutrient. So friends, it is not just deficiency. Many times toxicity can also be harmful. So we also have critical levels for toxicity. So toxicity is towards higher side. And toxicity does not happen in case of nitrogen, phosphorus, potash, or calcium, magnesium. Toxicity happens mainly in case of micronutrients. Micronutrients concentration, if it is in excess, it can cause toxicity. However, elements like nitrogen, it can be excess accumulation, no doubt. You will have more tender leaves,
more insect pest damage and so on, and more succulency in the fodder material or in the plant leaves. But it is not toxic actually to the plant. Similarly, phosphorus and potassium. In case of potassium, you can get luxury consumption, but it is not toxic actually. It is, of course, accumulation in excess, but it is not affecting the growth of the plants adversely. So it is mainly in case of micronutrients and some non-essential nutrient. Certain non-essential nutrient can also cause toxicity in the plant. For example, aluminum. Aluminum is not an essential element, but under certain conditions, particularly in acidic soils, its level become toxic sometimes. So plant cannot say that I will not take up aluminum. If it is growing in such soils, it will also take up aluminum, this plant. So therefore, aluminum toxicity can also happen. But mainly it happens in case of zinc. Sometimes zinc is in excess, and sometimes in case of iron, copper, manganese. In these cases, even nickel or chloride. Chloride toxicity is seen in wheat crop. So what is happening over years? We are applying this potassium chloride. Muriate of potash is a fertilizer through which we want to supply potassium. But large quantity of chloride is also going to the soil. So sometimes chloride toxicity can happen. Although chloride is very susceptible to leaching, but under certain conditions, soil conditions, chloride get accumulated in the soil and it can cause toxicity to the plants. So now coming to the critical concentration, we need to understand what is meant by critical concentration. So friends, critical concentration, you can remember, it is for deficiency as well as for toxicity. This is point number one. Number two, critical concentration can be expressed with respect to plant, means critical concentration in plant or critical concentration in plant for toxicity. Similarly, we can relate it to the soil also. Critical concentration in soil for deficiency, critical concentration in soil for toxicity. So now we see there are four kinds of critical concentrations, two each in plant and soil. So, and the meaning is same. Definition of all the four kinds of concentration is same. Whenever there is 10% reduction in growth or yield, whenever there is 10% reduction in growth or yield of the plant, at that particular concentration, at that particular yield, whatever is the concentration in that plant part or in that soil is your critical concentration for deficiency or toxicity. I repeat it again, means 10% reduction means the kind of concentration, the concentration in either plant or soil where there is only 90% of the maximum possible yield is achieved at that particular point of time. Whatever concentration is there in the plant, that is your critical concentration. So I can read it for more clarity for you. The nutrient concentration between deficiency and optimum supply range is the critical nutrient range. And this can go beyond the toxicity limit also. It can go. I'll show you a picture to understand more clearly. Critical concentration of nutrient, CCN means nutrient, is the concentration of a nutrient in plant that is likely to result in 90% of the maximum yields. So that is critical concentration. So it can be due to deficiency and it can be due to toxicity also. If a nutrient is present below CCN, the yield or quality of crops is declined. Or it can be, for toxicity, it can be higher concentration. If supply of deficient nutrient increased in soil, the crop growth or yield will increase till CCN is exceeded. Now I show you this picture very clearly. It can show you the meaning of critical concentration. Please see this picture. On x-axis, you have increasing concentration of the nutrient. Increasing concentration of the nutrient in soil. You can see on the left side here at the point of origin. It can be in plant, it can be soil. So on x-axis, the concentration is increasing in the plant or in soil.
On y-axis, you can see this is relative growth. Relative growth means it's from 0 to 100. 100 means maximum growth of the crop. Or you can see yield. It can be in terms of growth, in terms of dry matter, in terms of yield mainly. And now you can see as the concentration is increasing on x-axis, the y is increasing. The yield, the y-dependent variable is increasing. And it reaches up to 90% here at 90%. So at this particular point where you get 90% of the maximum growth, 90 power, where you get 10% reduction in the yield, that particular concentration is critical concentration for deficiency in plant or in soil. Now, acute deficiency is there in the beginning, and then there is one range where you get critical value. Here, up to some level, there may be hidden deficiency. Plant is suffering from the deficiency, suffering from the shortage of nutrient supply, but it is not showing us the symptom. That is your hidden deficiency or latent deficiency. So it is before the critical level. It is before the critical level. And then after the critical level, suppose at this level, you further increase the supply of nutrient. On x-axis, you go on increasing, you go on adding the nutrient and go on adding the concentration, increasing the concentration in plant. So it can reach 100%. It can reach 100%. So the optimal level starts. The optimum supply starts. The optimum concentration or the status of nutrient in soil or plant starts here. When you achieve the 100% of the growth. Here you get 100% growth. But this optimal supply also has a range. In agronomy, you see, we have a range. So sometimes we say optimum dose can also vary. Say 100 to 110 kg. Sometimes we give recommendation like this. So, and then there can be luxury consumption. In case of certain nutrients like potassium, there can be excess accumulation. So this actually line is not for the all nutrients. It is for you have to interpret yourself whether you are dealing with micronutrient, potassium, nitrogen. This is very generalized picture to understand the meaning of critical concentration. Now you see, suppose you have micronutrients. Suppose you have potassium, then graph will have this luxury consumption. Otherwise, if it is nitrogen, then you need not to show this luxury consumption. You can go only up to optimal supply. And then if you consider that this chart from this point onward, this line is meant for micronutrients because toxicity happens only in case of micronutrients. So after luxury consumption or excess accumulation of any nutrient bearing potassium, nitrogen, phosphorus, so you can have toxicity because you are increasing the concentration in soil or plant. You continue to increase. See the x-axis. This is increasing. Concentration of nutrient in soil or plant is increasing. And then the fall in growth starts. The growth starts decreasing due to light toxicity. And then it will continue to go. Then you can have acute toxicity. At acute toxicity, growth decreases. So here also, you will have here somewhere at this point, you will have 10% reduction in yield. Here you will get 90% of the maximum possible yield. So that means this will be critical concentration for toxicity. Critical concentration for toxicity either in soil or in plant. So this is how we understand critical concentration of nutrients. Do you have any question, any clarification from this picture? Sir, luxury supply is not for every element, right? Yeah, it is not. It is only for potassium or any others? Only for potassium. Luxury consumption happens only for potassium, and this actually happens in starch crops. Crops like potato and crops like tobacco. There are two crops where luxury consumption is normally observed. In case our soils are rich in potassium. If our soils are not, because if we have excess potassium in the soil, then only there will be excess accumulation of potassium in the plants. If our soils are just having normal
concentration or normal content of potassium in the soil, then there cannot happen a luxury consumption. If you have free availability of potassium, then it can happen. But now our soils are getting deficient in potassium also. In more than 50% soils are now potassium deficient. You can see the data. I'll share the data once I get the email. You asked me the current fertility status of Indian soils. So I'll share that presentation. You can see. So it is only in case of potassium. So this is very general graph. And this picture is made by Fink. Fink, 1992. He was a German plant nutritionist. He wrote a book on soil fertility and nutrients only in pictures. His whole book is in German language on soil fertility, but he explained everything in picture from one page to last page. I could not find a copy of that book, but for students, it is excellent resource. Everything he explained through picture. So it simplifies the understanding if you have things in picture. तो पिक्चर बनाना सीख लेगा स्टूडेंट, और सीख लेगा तो फिर मतलब भी अगर एक्सप्लेनेशन सुन लिया, समझ लिया, कंसेप्ट तो अपने वर्ड्स में लिख सकता है फिर वो. सो एनी क्वेश्चन विकास? नो क्वेश्चन. नो सर, अभी जो 2 क्रॉप बताए सर, पोटैटो टोबैको है ना सर, लग्जरी कंजप्शन के लिए? हाँ यस सर. जो स्टार्च सर, एक क्वेश्चन सर, स्टार्च जो बताया, स्टार्च जिसमें रिच होता है सर, तो क्या मेज नहीं होगी सर? मेज में तो नहीं होता, मेज में नहीं पाया गया. स्टार्च तो ऐसे राइस में भी होता है, और आपके सीरियल्स में सभी में होता है. लेकिन पोटैटो में क्या है, मेरे ख्याल से स्टार्च का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली. व्हीट राइस में 65% होता होगा, 60%. लेकिन पोटैटो में तो मैं समझता हूँ हो सकता 80-90 होता हो. इट इज रिच इन स्टार्च, आई थिंक. देखना पड़ेगा मुझे, but it is very rich in starch. And role of potassium is in translocation of photosynthetes or sugars. Basically in the first reaction we get sugar in photosynthesis, and those materials are transported to the storage or sink, where they are converted to starch. So during this period, potassium is very, very important in transport of sugars or transport of carbohydrates in the plant. Okay. Yeah. But you made a good question, but it is never observed in maize, this K accumulation. And that is why, particularly in this potato and tobacco, application of potassium chloride, which is muriate of potash, is not preferred, because this chloride ion is also absorbed by potato, and it reduces the keeping quality of the potato. Suppose excess chloride is accumulated in the potato tuber, then you cannot store this tuber for a long time. Shelf life is reduced. Similarly, in case of tobacco, if you use this chloride fertilizers, so you can lose the quality of the tobacco material. Some quality is affected. So that is why in potato and in tobacco, potassium sulfate is recommended in place of muriate of potash. People, those are worried who are worried about quality, they should use potassium sulfate as a source of potassic fertilizer. It is recommendation. So friends, now you see, just I want to show you that I told you that critical concentration is to be seen at a particular growth stage. Critical concentration are different for different crops. The concentration of critical concentration of rice cannot be compared to the wheat. Okay, this is number one. It will vary with the crop. Number two, it will vary with the element also. For different elements, you will have different critical concentration. And also this critical concentration will vary with the deficiency or toxicity. See the column number 1, it varies with the element. It varies with the stage of the crop. It varies with the whether you are talking about deficiency or you are talking about toxicity. So therefore, you see critical concentration and plant part analyzed. For different plant, if you analyze different plant parts, you can have different critical concentration also.
And what is the growth stage? So you can see these are at least 1, 2, 3, 4 factors which affect the critical concentration. The value which you are seeing are very specific. For example, the first you see nitrogen, it is for deficiency. Critical concentration is 2.5% nitrogen in the leaf blade at tilling stage. So at tilling stage, if leaf blade is analyzed, you know, this leaf of rice is made up of a blade and sheath, and this leaf blade you take, the critical concentration is 2.5%. Means at this it will show you the deficiency symptoms, and it will affect the yield. So you should increase above it. So this is deficiency. Now see for phosphorus, deficiency if it is 0.1% in leaf blade at tilling stage. इसको रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक ये मैसेज दे रहा कि भाई ये what does it mean actually. So for toxicity, you can see for toxicity it is 1%. So see the range is very high. For phosphorus, the range is very high. You normally have 0.15% phosphorus in rice leaves. So it can never go 1%, but exceptionally, if there is excess phosphorus supply, then toxicity can happen in case of phosphorus if it reaches 1%. So if it reaches 1%, that means there will be 10% reduction in growth and yield of rice. And this is concentration is in straw at maturity stage. So you can see at different, you can analyze yourself. Just I show you case of zinc. Zinc deficiency can happen when it is 10 ppm, only 10 ppm. So this is the critical level of critical concentration of zinc in rice, where it is in the shoot. Shoot means all the ground, above ground part are harvested. पूरा का पूरा पौधा काट लिया जाता है, जो हिल होता है राइस का उसको काट लिया जाता है जिंक का, and that tilling stage. So if it is 10 ppm, that means it is deficient. And if it is, see the toxicity, if it in the toxicity, it is 1500 ppm, which is about, you see, 0.15%. You divide it by 10,000, which will be percentage. So it will be 0.15% in straw at maturity. So this is how critical concentration is defined. This table is from Yoshida. This Yoshida has been very famous Japanese scientist, rice scientist. So he worked a lot of papers, lot of references are used by people dealing with rice crop. Now see some more data, friends. It is just to show you data. And this is from FAO. FAO, and you can see the element, nitrogen, phosphorus, potassium. This is for critical concentration again. And see wheat and rice, they have combined. In this case, they have combined wheat and rice. For nitrogen, it is 3% according to them, 3% critical concentration. And it is at a defined growth stage and defined plant part. So you can see on the bottom, note growth stage and plant parts in wheat and rice, they have used 1 to 2 nodes, whole shoots. Whole shoot they have taken at 1 to 2 nodes stage. For oilseed rape is your this rapeseed, Thoria, and your yellow sarso, brown sarso, they are rapes. In mustard is different, rape is different. So in this, they have studied at pre-flowering stage, and what they did, they took youngest mature leaf. For sugarcane, 5 to 7 month crop, third leaf blade from the top. Means in this case, whatever data we are seeing, they have specified the plant part that has been used, and they have also specified the growth of the crop that has been used. So they have defined these kind of concentration. Now, I think you could understand the interpretation of this plant analysis results through critical concentration. So, any question from this? No, sir. Okay. Now you see the next one.
Number B, other interpretation is, can we have some nutrient ratios? So this was given by, after analysis, nutrient ratios can be assessed to know the crop nutrient balances. So this system was started by Biophils in 1973. He called this diagnosis and recommendation integrated system. He called this DRIS system. So here he said the concentration, the absolute concentration is not more important, rather ratio of certain nutrient is important. So they have defined ratios for N and P, P and N can also be seen, N and K, K and N, and so on. So based upon that ratio, if ratio is wider, then it is fine for the nutrient which is as numerator. If ratio is narrow for the nutrient which is numerator, then it may be deficient. So we can match the nutrient ratios with the available ratios, but this is just very academic interest. This is just for academic interest. It has nothing now, no practical use of this approach these days. Only one question is there from this, that what is full form of DRIS? We can tell full form of DRIS and who invented it. Only 2 questions are asked from the students in your exams. Otherwise, it is of no use these days. Now, this has use particularly in research. These two they have to find their use in farming conditions. We have spoken a lot for leaf color chart. The science of leaf color chart started from International Rice Research Institute in year 1999. And after 1999, Punjab Agriculture University people started doing work on this leaf color chart in 2003 onwards. They did a lot of work. Then HAU, Pantnagar University, IARI, all have done work on leaf color chart. And it is useful also. But farmers have not adopted it. Reasons are to be seen why farmers have not adopted it for recommending nitrogen in rice. It started with rice, and then people extended this idea to wheat also, and finally to maize also. In 3 crops, leaf color chart have been employed to see the nitrogen status. Similarly, in experimental purpose, this spread meter is also used by some experimenters, not by the farmers. So this cost around rupees 1.5 lakh or 1.2 lakhs, this spread meter. So what these two are doing? These two are indirectly measuring the chlorophyll or greenness. They are measuring the greenness of the leaves. So it gives readings, and these readings have been correlated with chlorophyll, because chlorophyll gives you greenness, and it is this greenness is directly related to nitrogen. So people because chlorophyll contains nitrogen, or nitrogen is important part of the chlorophyll. So therefore, nitrogen is related to chlorophyll. Chlorophyll is related to color, deep color, light color. It is because of chlorophyll. And then this chlorophyll can be related to the color or green color. And this green color may be measured by leaf color chart or by the spread meter. Spread meter gives us reading like 40 reading, 50 reading, 30 reading, some different readings come. And in leaf color chart, sometimes we have five strips of different colors, or 6 also there, sometimes 4 are there. So different color strips are there. So what it can be done, regular monitoring of the plant nitrogen status up to the flowering stage we can do. And based upon this, we can do recommendations. If you are interested to know how to use leaf color chart, you can send me email. I have some presentation on this. I can share how to use leaf color chart, because here it cannot be discussed because I am supposed to discuss something different. So it measures both spread meter as well as leaf color chart. They measure the leaf greenness, which is a measure of the chlorophyll content in plant's leaves. Similarly, soil plant analysis development. This is spread meter or chlorophyll meter. It can also be called. It is the most commonly used to measure nitrogen status of plants. So indirectly, both of these are measuring
nitrogen status of plant indirectly. They help in better management of nitrogen, particularly in cereal crops like rice, wheat, and maize. So in case of these crops, recommendations have been developed by people, as I was talking about Punjab Agriculture University, HAU, and many other universities in India. They have given local recommendations. For example, for rice, recommendations are available. In case of rice, recommendations are available for transplanted rice as well as for direct seeded rice. So those kind of recommendations are not still used by the farmers. So this is a limitation. Now, is it clear this plant analysis? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now we go to soil testing or soil analysis. This is also a kind of approach or method to assess the soil fertility. What is the status of soil fertility? And in this case, there are many objectives of soil testing or analysis. So it accurately determines the status of available nutrients so as to give fertilizer recommendations, identify the deficiency or toxicity of nutrients if a nutrient is in excess, because we already have a rating chart. Rating chart is available, so we can see to determine the chemical forms of available nutrients. Many times it is needed. Some recommendations have come for ammonical nitrogen application, some for nitrate nitrogen application. Some recommendations are available for ratio of ammonical and nitrate nitrogen application. So many times form of the nutrient is essential to judge the general health and productivity of the soil, to estimate the response of crops to nutrients, to compare effect of seasons on nutrient availability. So there are many objectives, many purposes of doing soil testing. Now, some background research is required. Background research is required before soil testing. So it requires new crop varieties. Suppose we are going to have new crop variety. For older crop varieties which are existing, we know recommendation. Suppose by chance we have got a new cultivar, new variety. So then we have a right to develop the recommendation to get the testing of the soil, and we can observe that how much we can decide how much nitrogen will be required for the new crop or new varieties. Suppose some new fertilizer product has come, recommendation can change. Agronomic practices have changed, or such research have to determine the chemical form of available nutrients and their mobility, most suitable extractant for nutrients, general health and productivity of soils for various crops, norms for soil sampling and processing, response of crops to rates and methods of fertilizer, the effect of season on nutrient availability, and interaction of nutrient with moisture and other nutrients. So this is also important. So we should have some background data on this before going for soil testing. Now, steps in soil testing are 3. Representative soil sampling. First is soil sampling, then extracting the nutrient, and third one is interpretation of the results. So I have used this book, Roy and Co-Workers 2006. This is one of the best book on this subject, on soil fertility management as a whole. This book will help all of you. This very small book of 200 pages, 300 pages, and this is excellent book on soil fertility and nutrient management. So if you need it, just write me email, I will send you. Now, first major part is soil sampling. So what we do in soil sampling, there are different steps in soil sampling, and the quality of soil test will wholly depend upon the quality of your sampling. Sampling is very, very important because you are taking very small part of the soil, and that small part will represent the hectare of soil. So we have to be very, very precise and very, very true to the method while taking the soil sample. See the test sample, which is only about 0.00001% of the topsoil weight, very small fraction we are testing. So that has to be the true representative of the whole field. If our sampling is wrong,
then we cannot give the best results. Now, best time for sampling. Time for sampling is before sowing or planting and before fertilizer application. So normally best time is when you harvest the crop. After harvesting of the crop, sampling can be taken. So what happens many times after harvesting, people plow the land and then they take the sample, which is wrong. It should be taken from the undisturbed soil. It should be taken from undisturbed soil. Number two, each sample should have information sheet so that confusion does not happen. The field from which we have taken soil should be properly labeled. So in this case, field identification number should be there, farmer's name, person's name, address, previous crop, and some other details should be given about the sample. And then these are the suggested sampling procedure for a small field and for a large field. It is given by Fink. You can see representative soil sampling can be done in different ways. One is random. Random, just you can put some, select some places like this. There can be zigzag fashion. Like this, one can walk like this, walk like this, walk like this in the field. And if it is very big field, in big field, you can make different spots like this, different spots. And from each subunit, you can take some sub-samples. Here you are taking sub-samples. So this is for the large field. And depth of sampling depends upon researcher or person. Normally, the plow soil layer is 0 to 15 centimeter. And we should avoid the abnormal soil patches. There can be some abnormal soil patches, areas near fence, or used for storing animal manure. ढेर बना देते हैं मैन्योर का कभी कभी हम लोग, उससे सैंपलिंग नहीं करनी चाहिए, कहीं अलग से करनी चाहिए. जहां पे क्रॉप रेजिड्यू एक ही जगह डाल दिए, किनारों पे डाल दिए, वो अवॉइड करना चाहिए. दैट शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेशन. और जो जिस बैग में हम सैंपल ले रहे हैं, that bag should also be clean. Contaminated नहीं होना चाहिए वो बैग. जो हम implements यूज कर रहे हैं, auger यूज कर रहे हैं या खुरपी यूज कर रहे हैं, फावड़ा यूज कर रहे हैं, they should also be decontaminated. They should not have any soil or any kind of contamination. जंग भी नहीं होना चाहिए. खुरपी और फावड़े पे अगर जंग होता है तो उसमें आपके आयरन चला जाता है. आयरन जाने से प्रॉब्लम होती है. Many times if we want to do iron analysis, so our grinder, जो जिसमें ग्राइंडिंग करते हैं, मशीन होती है या मिक्सी होती है, वहां भी हमें देखना चाहिए कहीं आयरन ना आ जाए सैंपल में. अगर हम आयरन की एनालिसिस कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से ग्राइंडिंग मशीन आती है जिसमें आयरन नहीं आता. आयरन के लिए अलग से करनी पड़ती है ग्राइंडिंग. बाकी एलिमेंट ठीक है, आयरन वाले में कर सकते हैं. सो स्पेशल ऑगर्स विद ए कोर डायमीटर ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर. ऑगर हमारे कई तरह के आते हैं, सोयल सैंपलर कहते हैं उनको. इसमें ट्यूब ऑगर होता है, एक स्क्रू ऑगर होता है, एक कोर सैंपलर होता है, कोर सैंपलर. और अब तो बड़े बड़े सैंपलर भी आ गए हैं जहाँ पे आपका ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं, वहां पे काफी गहराई में सैंपल लेना पड़ता है. जहाँ ट्रीज वगैरह होते हैं तो उनके लिए ट्रैक्टर या मशीन से सैंपलिंग की जाती है. तो अलग अलग तरह के सैंपलर्स हैं जिनसे सोयल सैंपलिंग की जाती है. But in our case, most of the time, we use this spade method, or khurpi is also good. It gives us good sampling. Or we can use screw auger. Screw auger is also good. So if we are using this, suppose khurpi, so we can make a V-shape cut, and there should be depth of about 15 centimeter. And then we can take slice from both sides and collect the soil from one place. So it should be collected about 20 cores. 20 cores are required for 1 hectare area. If you are having core sampler आपने देखा होगा गोल गोल होता है नीचे, उससे अगर लेते हैं और उसमें डेप्थ 15 सेंटीमीटर रखते हैं, then you need 20 cores for each hectare area. The individual core or slices collected in a clean container. जो हमारा कंटेनर है, पॉलीथीन है, बैग है, उसको क्लीन होना चाहिए. A final sample of ½ kilo, आधा किलो उसमें से हम बांट लेते हैं, अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं, और ½ kg sample is enough. Now processing of the sample is important. For this we air dry it. In this case air drying is necessary.
इसको ओवन में नहीं रखते, नाइट्रोजन के उड़ने के चांस होते हैं, सल्फर के उड़ने के चांस होते हैं इससे, so they can be lost, so it is air dried. And the nutrient concentration or content is also reported on the basis of air dry soil. But under certain conditions, we also analyze the soil when it is wet soil analysis. If you want to do concentration of nitrate and ammonium nitrogen, then you need wet samples. It is always done on wet sample. If you dry, the nitrate will be converted into different forms. And in the meantime, you analyze the sample, this ammonium can be converted to nitrate. So we cannot get the real data for ammonical and nitrate analysis. In this case, we need to take the wet or fresh sample. I can say fresh sample is taken in case of ammonium and nitrate estimation. Otherwise, for other parameters, we can take air dry soil. Only fine soil less than 2 millimeter size is used for analysis. So we have sieves, different sieves, and we can sieve our sample. उसमें कंकर पत्थर जो भी हो सब निकाल देना चाहिए. As large fields often have large variation in soil type, they must be divided into subunits of different soils. दिखाया था मैंने आपको. Now, once you have done the sampling and your sample is ready, processed it, and then you go for analysis. So in analysis, your extraction of the nutrient is the number one priority. So extraction depends upon the element or the nutrient. For nitrogen, it is not extraction. For nitrogen, it is burning of the material. For nitrogen, phosphorus, potassium, or other elements, if you are doing in plant, that is burning or wet ashing is done. And if you are doing in soil, then extraction is done. Burning is done in case of nitrogen. Wet ashing is done in case of nitrogen. So methods are available for extraction of nutrients from plant sample as well as from soil samples. So the concentration of nutrient in the extracted solution are determined by standard methods are available. The results are expressed in nutrient concentration on air dry basis using standard units like percentage, gram per kg, milligram per gram, per 100 gram, or milligram per kg. So if we know the conversion factors, we can convert into different units. Suppose it is milligram per kg, we can multiply it by 2.24 and we can get the data in kilogram per kg. It is very simple. ppm is equal to milligram per kg, so we can easily convert to kilogram per hectare by multiplying with a factor 2.24. Nutrients may be indicated as elements. So this is important. Now, time has gone when agronomists used to report data on K2O basis or P2O5 basis. Now we have to give results on elemental basis like K, P, not P2O5 now. Even when we apply nutrients to the soil and when we do experiments, they should be written on the elemental basis, not on oxides. And then for nitrogen water-soluble fraction, now we are extracting the nutrients from the soil. So water-soluble fraction like nitrate, if we are interested in dry soil to know the nitrate, it is most suitable, but the capacity of mobilized organic nitrogen can provide additional information. Means generally for negatively charged ions, if we want analysis of sulfate, nitrate, chloride, etc., we can simply use plain water, distilled water, simple water, that will extract these negatively charged ions easily from the soil. But this is for soil, not for plant. For cations like calcium, potassium, magnesium, exchangeable portion is actually available portion in case of calcium, potassium, magnesium, which are attached to the clay complex or which are attached to the clay colloids and humus colloids. So these are actually in exchangeable form. So exchangeable nutrients are always adsorbed on the colloids. Colloids are of two types. One is organic colloid, which is humus, and inorganic colloid is your clay minerals. The clay minerals are inorganic colloids. So those are measured exchangeable, only exchangeable.
because their concentration in soil solution is very, very small, very insignificant. And we have to report their data in kg per hectare. For most micronutrients, cations, diethylene triamine pentaestic acid, DTPA. So this DTPA is used for extracting micronutrient cations. Cations are zinc, iron, manganese, copper. For their extraction, you need DT and also nickel. DTPA is used. In the case of anions like boron, hot water is used. Hot water is used for soil analysis. Now you can see extractant, common extractant, I think you know it. We also have one practical manual. If you need a practical manual, we published it. I can give you soft copy of the practical manual that can be helpful to you for establishing a soil fertility analysis lab or plant nutrition lab. And it gives you different methods for analysis of nutrients. And that is actually fully Indianized. That is fully Indianized. We made some changes here and there so that testing becomes easier in Indian labs, agricultural labs. So we can provide you. So now you see common extractant. For nitrate, it can be simply water. Otherwise, you can use KCl. KCl or calcium chloride can be used. And then it is from the solution. Interesting fact is that most of the nitrogen is in solution form. I think because do you know what is solution in soil? Do you have idea? Just I want to know yes or no. If you don't know, I can tell you. If you know, you can tell me. सर Yeah. सर इसका आइडिया तो पर एग्जैक्ट तो नहीं सर मतलब जी कोई बात देखो nutrients are present in different forms in the soil. Forms in the soil. And where first we need to know where from nutrients are coming. What are the sources of nutrients in the soil? This is number one. Number two, how they are getting converted into available form. Because we add organic matter, we add fertilizers, whatever we add. So now these nutrients are not in available form directly. They need to be converted into available form in the soil after their addition, isn't it? So first, these nutrients will be converted into available form. And then these nutrients will be transported. These nutrients will be transported from one place to another place, from higher concentration, generally from higher concentration to the lower concentration. And how they are transported? They are mainly transported with the water, In the water, these by mass flow or through the diffusion, nutrients move. So these available nutrients are mixed in the water. And then they are moving or mobile in the soil, and they sometimes reach to the plant roots. Because near the plant roots, these nutrients are being consumed. So actually there is deficiency of these nutrients around the plant roots, because these nutrients are having higher concentration in other area which are away from the roots. So then the nutrients in solution form, they move, means nutrients in water. Available nutrients in water is known as soil solution. It is mainly combination of available forms of nutrient plus water. Then this moves towards the root. And when they go towards the root, again the roots will take up these nutrients. So now a question comes that from soil solution, the nutrients will be taken up by the roots. And then soil solution will lose the nutrient. And now where from these nutrients will come to replenish the loss? जो loss हुआ है solution से वो कहाँ से आएंगे? Those nutrients will come from organic matter, from fertilizer, from biofertilizer, and also from soil minerals. Soil minerals will give you nutrients. So there are 3-4 important sources, and they can also come from the colloids. I was telling you, soil colloids are clay minerals as well as humus. Humus and clay mineral, these are the reservoir of the nutrients.
So nutrients are attached to the humus and clay minerals. Those nutrients are actually called as exchangeable nutrients. So those exchangeable nutrients will become part of the soil solution once the plant start taking up nutrients. So these nutrients with the soil solution and on the exchangeable side are in equilibrium. आप समझ रहे इक्विलिब्रियम कि भाई एक कम होगा तो वो एक कम होगा तो उसकी कमी दूसरा पूरा करेगा। मान लो उल्टा हो जाए, सपोज करो सोयल सॉल्यूशन में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो जाए, बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन हो गया, बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, सोयल सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो अब क्या करेगा सोयल सॉल्यूशन का न्यूट्रिएंट फिर एक्सचेंजेबल साइट पे जाके चिपक जाएगा कि भाई मैं तो यहाँ एक्सेस में हूँ। सो देयर इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम। जो ऑर्गेनिक सोर्सेस है उनका भी सोयल सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम होता है। अगर ये मान लो ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक हुआ, उससे सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स बने, पानी में आ गए, अगर वो एक्सेस में हो गए तो वापस ऑर्गेनिक मैटर में चले जाएंगे, दोबारा माइक्रोब्स ले लेंगे उनको। माइक्रोब भी जो क्या करते हैं ना सोयल के, बड़े आलसी होते हैं, जो घुला घुलाया न्यूट्रिएंट होता है सोयल सॉल्यूशन से उसको भी खाते हैं, उसको भी लेते रहते हैं। तो आपको और हमको यही ध्यान रखना, जो एक्सचेंजेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी एक तरह का रिजर्व होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में होते हैं। जैसे K+ चिपका होता है, आपका जितने भी प्लस वाले हैं वो हमारे जो कोलाइड्स हैं उनसे चिपके रहते हैं, जिसको हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कहते हैं। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मींस अमाउंट ऑफ टोटल कैटायन, कितने कैटायन उपलब्ध हैं जो कि हमारी सॉइल के कोलाइड से अटैच्ड हैं, उनका वेट क्या है, कितने सेंटीमोल पर 100 ग्राम या पर केजी सॉइल है वो, ठीक है, तो उनका वेट लिया जाता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी निकाली जाती है। तो इसका मतलब ये है, इसी तरीके से एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। जो हमारे कोलाइड्स होते हैं किले के और ह्यूमस, इन पे पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगेटिव चार्ज होता है। जहां जहां निगेटिव चार्ज है वहां कैटायन लग जाएंगे आके, लेकिन कहीं कहीं हियर एंड देयर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं इस पे, तो उन पॉजिटिव चार्ज पे जाके सल्फेट लग जाएगा, क्लोराइड लग जाएगा, नाइट्रेट लग जाएगा, लेकिन उनकी पॉजिटिव चार्ज की जो मात्रा होती है, वैल्यू होती है, वो कम होती है, और जो निगेटिव चार्ज होता है कोलाइड्स पे वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए कैटायन की मात्रा आपके ज्यादा होती है कोलाइड्स पे और एनायन की मात्रा कम होती है। इसलिए बाकी जो एनायन होता है वो बेचारा सोयल सॉल्यूशन में ही पड़ा रहता है। सल्फेट है, नाइट्रेट है, जो माइनस चार्ज वाले होते हैं, ये सॉल्यूशन में ज्यादा होते हैं और इनकी लीचिंग हो जाती है। जो एक्सचेंजेबल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कोलाइड्स पे लगे होते हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल न्यूट्रिएंट में काउंट होते हैं। किसी भी न्यूट्रिएंट के बारे में अगर हम बात करें तो अवेलेबल न्यूट्रिएंट इज इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन प्लस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन एक्सचेंजेबल साइट्स, दैट इज योर कोलाइड। क्लियर हुआ? सोयल सॉल्यूशन मींस पानी में अवेलेबल न्यूट्रिएंट घुला हुआ है और वो घूम रहा है, लेकिन ये जो सोयल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होता है बहुत मामूली कंसंट्रेशन होता है, बहुत कम होता है कंसंट्रेशन, और वो प्लांट हमारे अपटेक करते हैं। क्लियर हुआ? सोयल सॉल्यूशन एक्सचेंजेबल कैसे क्या होता है। अब जी अब हम इसको देखते हैं, अमोनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अमोनियम को एक्सट्रैक्ट करना, जो सोयल में आप जानते हैं नाइट्रोजन की अवेलेबल फॉर्म दो होती है, अमोनिकल फॉर्म, नाइट्रेट फॉर्म। तो दोनों को जी सर। एक साथ भी मेजर कर सकते हैं हम और अलग अलग भी मेजर कर सकते हैं। तो अमोनियम का करना तो KCl एक्सट्रैक्ट करता है, KCl एक्सट्रैक्ट करता है। KCl दोनों को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, नाइट्रेट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है और अमोनियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसका 2% का सॉल्यूशन लिया जाता है। आपने सॉइल ली, उसमें KCl का 2% सॉल्यूशन डाल दिया, तो वो अमोनियम और नाइट्रेट दोनों को एक्सट्रैक्ट कर देता है। और अमोनियम को तो करता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम के अंदर पावर है कि अमोनिया को सोयल कोलाइड से हटा के और सॉल्यूशन से हटा के फ्रीज बाहर निकाल देगा, पानी में ला देगा। इसी तरीके से जो क्लोराइड है, KCl का जो क्लोराइड है, ये नाइट्रेट को हटा देता है। तो आपके KCl दोनों मिलके अगर हम डाल दें तो अमोनियम और नाइट्रेट दोनों हमारे एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ी आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर इनका मेथड अलग अलग है। पहले हम अमोनियम की एस्टिमेशन करते हैं जेल्डाल मेथड से, और इसके बाद उसमें डेवर्डा एलॉय और मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल देते हैं, जिससे नाइट्रेट रिड्यूस होकर अमोनिया बन जाता है। फिर इसकी एस्टिमेशन कर लेते हैं। यानी दोनों की एस्टिमेशन एक साथ भी की जा सकती है,
लेकिन स्टेप अलग अलग है। अमोनियम का स्टेप पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप नाइट्रेट का। अगर हमें अमोनियम जानना है तो सिर्फ अमोनियम जान के हम रुक जाएंगे, अगर नाइट्रेट भी करना है तो सेकंड स्टेप कर लेंगे। तो ये हमारा केसीएल इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टेंट है अमोनियम और नाइट्रेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अभी आगे देखेंगे न्यूट्रिएंट सोर्स क्या है। अब देखो नाइट्रोजन के सोर्स के आगे तो सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब ये जो नाइट्रेट है ये सिर्फ सॉल्यूशन में है, एक्सचेंजेबल साइड पे ये ना के बराबर है। तो जो भी हम सोयल का नाइट्रेट एस्टिमेट करते हैं मोस्टली वो सॉल्यूशन वाला होता है। समझ में आया पॉइंट। अब दूसरा अमोनियम जब हम करते हैं, एक्सट्रैक्टेंट केसीएल ही है इसमें भी, लेकिन ये दो जगह से आता है अमोनियम, एक तो सॉल्यूशन में मौजूद होता है, एक सीईसी पे मौजूद होता है। फिर हम H2PO4 और HPO4 जो फास्फोरस के आयंस है, ये आप देख रहे हैं H2PO4 एक होना चाहिए, इसमें HPO4 टाइपिंग मिस्टेक है, एक होगा HPO4-2। इसको हम अगर एसिडिक सॉइल है तो मेलिक का सॉल्यूशन यूज करते हैं, इसको आप छोड़ दो। जो हम यूज करते हैं हमारी अल्कलाइन सॉइल्स होती हैं, तो हमारे लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देख रहे हैं आप, ओलसन फास्फोरस, जो इंडिया में हम लोग करते हैं ओलसन फास्फोरस करते हैं। और इसमें कैल्शियम फास्फोरस मिनरल सोलिबिलिटी, मेनली फास्फोरस जो है ना कैल्शियम के साथ अटैच रहता है, तो उसी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फास्फोरस को, क्योंकि निगेटिवली चार्ज आयन है। निगेटिवली चार्ज आयन है ये सोयल सॉल्यूशन में बहुत कम होता है, और फिर ये आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का भी पार्ट नहीं बन पाता, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस इतनी फास्ट रिएक्शन करते हैं। आज आपने सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी डाला, तुरंत कैल्शियम के साथ फास्फोरस की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और फास्फोरस की जो 3-4 फॉर्म्स होती हैं सोयल में, सबसे पहली होती है H2PO4, दूसरी HPO4, तीसरी PO4, चौथी आपके ट्राई कैल्शियम फास्फेट, फिर आपकी ओक्टा कैल्शियम फास्फेट, जिसको हम कहते हैं एपेटाइट। एपेटाइट एक मिनरल होता है जिसमें कैल्शियम 10 होते हैं, 10 कैल्शियम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम बढ़ता जाता है। शुरू में कैल्शियम कम होगा, H2PO4 में कैल्शियम कम होगा, लेकिन अगला जो आएगा HPO4, उसके साथ कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। फिर तीसरा आएगा ट्राई कैल्शियम फास्फेट, उसमें 3 कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम की मात्रा होता है ना, मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, ट्राई कैल्शियम, ऑक्टा कैल्शियम, तो इनमें कैल्शियम बढ़ता जाता है। उसकी वजह से इसकी सोल्युबिलिटी कम होती जाती है। सोल्युबिलिटी का मतलब है अवेलेबल, अवेलेबल न्यूट्रिएंट। तो ये जो हमारा कैल्शियम फास्फोरस की मिनरल सोल्युबिलिटी है, इसी से हमारा फास्फोरस आता है। ऐसा नहीं है फास्फोरस H2PO4 की पड़ा हुआ, ये तुरंत कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है। आपको ब्राडी की किताब में दूंगा, उसमें काफी इसको डिटेल में समझाया गया, दिस फास्फोरस एंड कैल्शियम का रिलेशनशिप। फिर आपका पोटेशियम आता है, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट एक्सट्रैक्टेंट होता है, इससे हम पोटेशियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो हम सोयल में जो सोर्स है वो सिर्फ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, यही ज्यादातर पोटेशियम लगा होता है और यहीं से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें अब उल्टा हो रहा है, यहाँ अमोनियम जो है पोटेशियम को हटा दे रहा है। दूसरे केस में आपने देखा था ना, ये बड़े आपस में इनके बहुत अलग तरह के रिलेशन है, पोटेशियम और आपके अमोनियम के। तो यहाँ पे आप देखें अमोनियम एक्सट्रैक्टेंट का काम कर रहा है पोटेशियम का। ऊपर आपने देखा केसीएल में पोटेशियम काम कर रहा था अमोनियम को एक्सट्रैक्ट करने का। दोनों मतलब अजीब बात है ऐसे कहोगे आप, लेकिन ऐसा होता है। अब आप देखेंगे सल्फेट का। सल्फेट के लिए नॉर्मली हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एक्सट्रैक्टेंट का यूज करते हैं। इसमें जो क्लोराइड होता है ये सल्फेट को रिप्लेस कर देता है और सल्फेट सोयल में सॉल्यूशन में आ जाता है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए हमने बात की थी, नॉर्मली डीटीपीए यूज होता है। डीटीपीए एक्सट्रैक्टेंट है, ये यूज किया जाता है। ये पहले लोग ईडीटीए का भी यूज करते थे। इसमें मेनली आपके जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मिनरल सोलिबिलिटी, ये जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये फ्री फॉर्म में नहीं रहते, इनके भी एकदम मिनरल बन जाते हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट का लेवल होता है उसके साथ वो मिनरल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जैसे हम देखें आयरन है, तो आयरन मेनली आयरन हाइड्रोक्साइड के रूप में मिलेगा, आयरन ऑक्साइड्स के रूप में मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर इन सोयल। अगर वाटर ज्यादा होगा सोयल में तो ये फेरस फॉर्म में मिलेगा, फेरस सल्फेट होगा, फेरस हाइड्रोक्साइड होंगे। अगर ये एरोबिक कंडीशन है तो फेरिक फॉर्म में होगा। अगर पानी नहीं होगा खेत में
हमारा गेहूं का खेत है मान लो, तो उसमें ये फेरिक फॉर्म में होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा। ये भी मिनरल्स सोलिबिलिटी से आते हैं। फिर बोरोन हॉट वाटर ट्रीटमेंट से आ जाता है। गर्म पानी लिया तो बोरोन मिट्टी के सैंपल से अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से क्लोराइड को हम पानी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज आप पूछना चाहते हो मैडम? नहीं सर, तो ठीक ठीक। नो सर। Okay. Interpretation of data for fertilizer requirement. Now we have done the soil test. We have found the result that nitrogen is so much, phosphorus is so much, potassium is so much. Now how to interpret this result? What is the meaning out of this? So generally lower the soil test value of a nutrient, higher is the need for external nutrient application. If soil test value, naturally अगर आपका नाइट्रोजन की टेस्ट कम आई रिपोर्ट, तो वो ज्यादा डालनी पड़ेगी। कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा आया तो उसको हमें कम डालना पड़ेगा, ये मतलब है। ये आपको टेबल में दिखा रहा हूं, या खुद आप स्टडी कर लेना, कोई ज्यादा मतलब नहीं है इसका। अभी देखिए आप, एक मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, इसमें अगर कैसे हेल्प करता है। सोयल टेस्ट अगर हमने कर लिया न्यूट्रिएंट का, तो उससे हम कई बार रिकमेंडेशन बना देते हैं। अब देखिए इसमें कैलिब्रेशन फॉर द प्रे, ये एसिडिक सॉइल के लिए है, लेकिन ये कैसे करता है। वेरी लो लेवल आया आपका फास्फोरस का, लेस देन 5। यहाँ आपका मेलिक 3 रिएजेंट यूज किया, अलग अलग एक्सेक्टेंट है। हमारा ओल्सन ओल्सन रिएजेंट था जो अभी आपको दिखाया था। इससे आप देखिए अलग अलग रिएजेंट यूज करने से आपके अलग अलग फास्फोरस की जो है वो अवेलेबिलिटी आई सॉइल में। वेरी लो सॉइल्स में लेस देन 5, ब्रे वाले को लेस देन 5 कहा जाएगा, वेरी लो। मेलिक वाले को लेस देन 7 कहा जाएगा। ओल्सन के केस में अगर लेस देन 3 है तो हमारा वेरी लो है। इसके केस में ये है। ये मतलब एक तरह का रेटिंग चार्ट है अलग अलग। आप देखेंगे अगर हमारा फास्फोरस लेवल वेरी लो है तो आपको ज्यादा फास्फोरस डालना पड़ता है, ज्यादा फास्फोरस डालना पड़ता है। अगर हमारा लो है तो इससे कम डालना पड़ता है। आपका मीडियम है तो और कम डालना पड़ता है। हाई और वेरी हाई कोई भी न्यूट्रिएंट हमारा आता है तो वहां पे हमें कुछ भी नहीं डालना होता है। ये इसका मैसेज है। इसी तरीके के चार्ट हमारे जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वो पहले से ही बना के रखते हैं कि कौन सी क्रॉप आप लगाओ, क्या लगाओगे, उसकी रिकमेंडेशन चार्ट सॉइल के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से बने बनाए होते हैं और वो रिकमेंडेशन दे देते हैं। इसी तरीके से मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। ये एफएओ ने बताया था। एफएओ आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत काफी पुरानी टेबल है लेकिन काफी यूजफुल है। ये भी इसी तरह की है। सोयल फर्टिलिटी, ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ सोयल टेस्ट डेटा फॉर सम न्यूट्रिएंट इन सोयल विद मीडियम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। सो आप वेरी लो, आप देखें लेस देन 5 फास्फोरस है। अगर फास्फोरस का केस देखें, पोटेशियम के लिए इन्होंने वेरी लो 50 रखा है, मैग्नीशियम के लिए लेस देन 20 रखा हुआ है। ऐसे लो के लिए, मीडियम के लिए, हाई के लिए, वेरी हाई के लिए। अब आप पहला और लास्ट का कॉलम देखो बस। अगर आपका वेरी लो है तो रिलेटिव यील्ड विदाउट फर्टिलाइजर 50% लेस आ रही, बहुत आधी यील्ड आ रही है हमारी। पहले कॉलम में हम देखें सॉइल फर्टिलिटी क्लास लो है। अगर हमारा लो फास्फोरस है या लो पोटेशियम है या लो मैग्नीशियम है तो 50 से 80% यील्ड ही हमको मिल पाएगी। फिर मीडियम अगर स्टेटस है हमारा किसी भी एक न्यूट्रिएंट का, तो 80 से 100 मिलने की संभावना है, बट इट इज नेवर 100%। और अगर लास्ट में हाई या वेरी हाई हो तो आपको 100% यील्ड मिल जाएगी विदाउट फर्टिलाइजर। लास्ट कॉलम में आप देखें एक्सपेक्टेड रिलेटिव यील्ड विदाउट फर्टिलाइजर। सो यहां फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं। Now microbiological methods, they are really not very important and they are just for the namesake, and they are used in entrance examination from the students. That azotobacter plague technique is used to measure dash phosphorus, potassium, A phosphorus, B potassium, C phosphorus and potassium both, and D none of the above. So answer is phosphorus and potassium. बस इसी काम का बचा, इसका कोई यूज नहीं है सोइल फर्टिलिटी एनालिसिस में। दूसरा एस्परजिलस नाइजर टेस्ट है। ये आपका फास्फोर, ये भी फास्फोरस और पोटेशियम के लिए यूज होता है। और कनिन घमेला प्लेग मेथड, इट इज यूज फॉर फास्फोरस
and carbon dioxide evolution method used mainly to judge the soil organic matter states. ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन मेथड. इस पे लोग करते हैं, यूरोप में भी करते हैं, इंडिया में भी करते हैं. ये माइक्रोबायोलॉजी वाले करते हैं. सपोज यू वांट टू सी द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल, कि भाई हमारी सॉइल में माइक्रोब क्या ज्यादा है या कम है. आपको एक ही क्वेश्चन है आपका कि हमारी जो सॉइल है इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी लो है, मीडियम है या हाई है, मतलब क्या स्टेटस है माइक्रोबियल एक्टिविटी का. तो उसके लिए बड़ा आसान आजकल इक्विपमेंट आ गए हैं, चीजें आ गई हैं. उसके लिए फिजिकल मेथड्स भी हैं और केमिकल मेथड्स भी हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने के. तो वहां ये वो मेथड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड ये वाला यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. Now, the other approach is remote sensing approach. So remote sensing means getting information about a thing from a distance place or from the distance without touching it. That is your remote sensing. किसी चीज को बिना छुए आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. तो जैसे पुराने जमाने में बताते हैं कि हमने फोटो ले लिया किसी का, तो फोटो भी एक तरह का रिमोट सेंसिंग है. आपने उस आदमी को टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, दूर से आपने फोटो ले ली. वो भी एक एग्जाम्पल है रिमोट सेंसिंग का. सो हम जानते हैं जो हमारी व्हाइट लाइट होती है जो हमें मिलती है, सोलर रेडिएशन होता है, इसमें स्पेक्ट्रम होता है और इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम होता है और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है. इन दोनों के सेंसर्स आ गए. विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड सेंसर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट प्लांट स्ट्रेस रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड पेस्ट. तीन चीजों में इसका यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में. When light energy, we know it has got some colors: green, blue, red, and near infrared wavelengths. Strike a surface, whether leaf surface or any surface, particular leaf surface, blue and red wavelength are absorbed by chlorophyll. Blue and red are absorbed by chlorophyll, while green and near infrared wavelength are reflected. इसी पे आधारित है जो रिमोट सेंसिंग अप्रोच है. इसमें हम पौधे की ग्रीननेस देखते हैं. अगर वो अच्छे से ग्रीन है, खूब ग्रीन है, इसका मतलब हमारी फर्टिलिटी भी अच्छी है. यही मैसेज है इसका. सो रिफ्लेक्टेड लाइट इज मॉनिटर्ड बाय एन ऑप्टिकल सेंसर. मशीन होती है, उससे रिफ्लेक्टेड लाइट का हम पता लगा लेते हैं कि कितना विजिबल रिफ्लेक्ट हुआ और कितना प्रोपोर्शन, कितना परसेंटेज. इंफ्रारेड सेंसर मींस इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसको भी मेजर कर लेते हैं. जो आउटगोइंग है, जो वापस रिफ्लेक्ट होता है, उसको भी मेजर इंस्ट्रूमेंट ये कर लेते हैं आपके सेंसर्स. और उसमें से विजिबल कितना रिफ्लेक्ट हुआ और हमारा जो इंफ्रारेड है वो कितना रिफ्लेक्ट हुआ, ये दोनों की मेजर ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट से हो जाती है. The contrast of light reflectance and absorption by leaves enables assessment of quantity and quality of vegetation. So in this case, जैसे क्या होगा इसमें कि दो ग्रुप है मान लीजिए प्लांट के, एक में आपके नाइट्रोजन की कमी है और एक में नाइट्रोजन सफिशिएंट. तो इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों के केस में जो पैटर्न होगा रिफ्लेक्टेंस का और एब्जॉर्प्शन का, आपके जो विजिबल स्पेक्ट्रम है और जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, दोनों में अलग होगा, कंट्रास्ट होगा. मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्या अंतर होता है. सो क्लोरोटिक और नाइट्रोजन स्ट्रेस लीव्स एब्जॉर्ब लेस लाइट. जहां आपका ग्रीननेस कम होगा, वो आपका जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, ब्लू और रेड लाइट है, इसका एब्जॉर्प्शन कम करता है. जहां ग्रीननेस ज्यादा होती है वहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है. सो नेचुरली जहां पे एब्जॉर्प्शन कम होगा वहां पे रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा, और जहां पे एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी वहां पे रिफ्लेक्टेंस कम होगा. So a common index used to evaluate vegetation cover is this normalized difference vegetation index, NDVI. बहुत पुरानी चीज है ये NDVI, calculated by formula NIR minus PAR divided by NIR plus PAR. NRI near infrared wavelength or radiation. PAR is photosynthetically active radiation. So this is formula and you get some index like 0.2, 0.5, 0.7, 0.8, some ranges you get, and compare it with the off-level data. So use of NDVI is based on growing plants is strongly absorbing PAR or visible light while strongly reflecting near infrared radiation.
So this is the principle. This is the principle that NDVI is used on growing plants, is strongly absorbing PAR of visible light while strongly reflecting near infrared radiation. NDVI increases with increasing leaf greenness. So value will increase. And with green leaf biomass highly correlated with plant nitrogen status. Remote sensing of growing crops can be used to identify in-season nitrogen requirement. So real time nitrogen requirement means जब हमारा फसल grow हो रही है, टिलिंग स्टेज है या दूसरी एडवांस स्टेज है, वहां पे भी हम देख सकते हैं कहीं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी तो नहीं है. और इसी का यूज आपका वीड आइडेंटिफिकेशन में भी करते हैं, कुछ लोग डिजीज आइडेंटिफिकेशन, इंसेक्ट पेस्ट डैमेज, बट उनके पैरामीटर थोड़े अलग हो जाते हैं, स्टडी अलग तरह से उनको करनी पड़ती है. This information is used to predict grain yield potential for purposes of estimating top dress. So लोगों ने क्या करा, तमाम मॉडलिंग भी कर दिए, बेस्ड अपॉन एनडीवीआई मॉडलिंग कर दिया है, जिन मॉडल के आधार पर प्रिडिक्शंस भी लोग कर देते हैं कि आपकी इस स्टेज पे इतनी एनडीवीआई वैल्यू है तो आपकी यील्ड ये आएगी, क्योंकि लोग आपके इनमें मॉडलिंग में क्या है, रिग्रेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन की बहुत ज्यादा यूज होती है. उसको करके लोग रिलेशनशिप बना देते हैं टू वेरिएबल, NDVI growth parameter, NDVI yield, and within growth parameter and yield. तो ऐसे करके लोग एडवांस में प्रिडिक्शंस कर देते हैं. Remote sensing is used, is readily incorporated into real-time leaf reflectance guided variable top dress. So इसकी मदद से कई बार टॉप ड्रेसिंग का गाइडेंस मिल जाएगी, हम टॉप ड्रेसिंग नाइट्रोजन की कर सकते हैं अगर NDVI की वैल्यू कम आती है, क्रिटिकल वैल्यू से कम आती है, तो इसमें हम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं. अब इसमें आप समझिए, इससे मोर क्लियर हो जाएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको पिक्चर से. ये आप देखिए वेजिटेशन है, कोई भी वेजिटेशन, ग्रीन वेजिटेशन हो सकती है. अब इधर आप देखिए, इधर हमारी वेजिटेशन जो है वो डार्क ग्रीन है और बहुत डेंस है, मतलब अच्छी ग्रोथ है. इधर लगता है नाइट्रोजन की कमी नहीं है, काफी ग्रीननेस है. तो इधर आप देखेंगे कि जो हमारी लाइट आती है, जो सनलाइट आ रही है, जैसे ये सन देख रहे हैं आप, इससे सनलाइट आ रही है, सनलाइट का आप देखेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है. सो विजिबल लाइट का 10% का, जितनी भी लाइट इनकमिंग रेडिएशन था जो प्लांट पे पड़ा, उसका ओनली 10% इज रिफ्लेक्टेड. बाकी जो 90% विजिबल स्पेक्ट्रम था, जो रेड और ब्लू वेवलेंथ थी, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई. इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल ज्यादा था, इसलिए रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, और बहुत कम इसने रिफ्लेक्ट की जो विजिबल लाइट थी. अगर हम देखें नियर इंफ्रारेड, सो इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ लगभग 50% हुआ और 50% रिफ्लेक्टेंस हुआ है. एक चीज, पहली चीज तो यह है लेफ्ट साइड में जहां बहुत ग्रीन वेजिटेशन थी. दूसरी तरफ आप देखें लाइट ग्रीन, येलो एंड स्पार्स वेजिटेशन, चीदी चीदी है, बहुत दूर दूर पौधे हमारे लगे हुए. यहाँ आप देखेंगे, पहले विजिबल को देखिए आप, प्लांट के ऊपर 100% आया, लेकिन रिफ्लेक्शन यहाँ 30% का हुआ और एब्जॉर्प्शन यहाँ 70% का हुआ, क्योंकि यहाँ स्पार्स वेजिटेशन थी, येलो कलर की वेजिटेशन थी. तो यहाँ विजिबल जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, एब्जॉर्प्शन उसका कम हुआ, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल कम था. क्लोरोफिल कम था. क्लोरोफिल कम क्यों था? क्योंकि नाइट्रोजन कम थी. प्लांट में कम क्यों थी नाइट्रोजन? क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन कम थी. तो इसका मतलब सॉइल की फर्टिलिटी का इनडायरेक्टली हमें पता इससे लग रहा है. अब इसमें आप देखिए नियर इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, ये 40% इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि अच्छी खासी मात्रा है. इधर 50% था, इधर आपका 40% है. अब ये चार वैल्यू हमारे पास होगी, एक 10% हो गया, एक 50%, एक 30%, एक 40%. इन चारों वैल्यू को हम फार्मूले में रख देते हैं. परसेंट को आप जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे 40% है तो इसको 40/100 लिख सकते हैं, इसका मतलब 0.4 हो गया. 30% का मतलब 0.3 हो गया, और 10% का मतलब 0.1 हो गया, और 50% का मतलब 0.5 हो गया. सो यही वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हम रख सकते हैं, परसेंटेज हटा देते हैं. तो एनडीवीआई जो ग्रीन के केस में आप देखिए 0.50 माइनस 0.10, जो फार्मूले के हिसाब से रखा है वैल्यू. नियर इंफ्रारेड रेडिएशन माइनस PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और नीचे इन्हीं चीजों को जोड़ दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है. सो इंडेक्स इज 0.67.
आपका दूसरी तरफ देखें, जहां डेफिशिएंसी थी, जहां येलोनेस थी, वहां 0.4 माइनस 0.3 एंड डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 0.3, सो 0.14 यहाँ कम है। तो आप देख सकते हैं एनडीवीआई ने एटलीस्ट हमें बता दिया कि भाई अगर इस 0.67 या इसके ऊपर वैल्यू है तो हमारी फसल ग्रीन होगी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन ये इससे कम है, अगर वैल्यू बहुत कम है लाइक 0.14, सो आप देख सकते हैं इनडायरेक्टली इसमें नाइट्रोजन फर्टिलिटी की बताता है बात। अब लोग फालतू में झूठ बोलते फिरते हैं कि फास्फोरस जिंक सबका कर देगा, नहीं करेगा, ये सिर्फ ग्रीननेस की बात है। हो सकता है कल के दिन को कुछ और आ जाए, सेंसर आ जाए, लेकिन एज ऑन टुडे ये सिर्फ नाइट्रोजन के लिए है और किसी एलिमेंट के लिए नहीं। आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नो सर। No, sir. नो सर। ओके, थैंक यू। नाउ आपने देख लिया, 5 अप्रोच हमने देख ली, अलग अलग देख ली, जिनसे हम फर्टिलिटी इवेलुएट करते हैं। जो आखिरी अप्रोच बचती है, हालांकि काफी महंगी है, काफी मुश्किल है, टफ भी है, लिमिटेशन भी है, लेकिन ये तो फाइनल है, अल्टीमेट है। अब आप देखिए, जैसे गांव में हम जाते हैं, खेती बाड़ी देखते हैं, अपने ही फील्ड पे आप देखेंगे तो क्रॉप देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा। आप क्रॉप बहुत अच्छी ग्रीन, अच्छी ग्रोथ है, ब्रांचिंग है, ट्रिलिंग है, ये है वो है, आप कह दोगे कि यार इसकी जमीन बड़ी जानदार है, फसल को देख के ही कह दोगे। फसल आपकी कमजोर है तो पहले पहले उसमें चाहे रीजन आपका कुछ भी हो, पहले पहले ग्लांस में आप यही कहोगे कि यार इसकी तो जमीन में जान ही नहीं, कमजोर है इसकी फर्टिलिटी। तो फसल की वो देख के ही जो है ना हम बता देते हैं ऐसे ही। तो इसका मतलब ये है कि उसमें अगर हम फसल उगाते हैं, टेस्टिंग लैब में करना ठीक है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन जो रियली ग्राउंड में हम करते हैं, कई बार मिट्टी के अंदर बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, मेनी एलिमेंट्स कैन बी देयर, but there the soil is not able to supply those nutrients to the plant. There may be many reasons, pH खराब हो उसका, salt accumulation हो, कोई प्रॉब्लम हो, फिजिकल फर्टिलिटी उसकी खराब हो, खेत में पानी भरा हो, तो ऐसे करके मतलब उन चीजों से हम लैब में जो है वो उतना पता नहीं लगता जितना रियल सिचुएशन में हम लगा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस जानने का तरीका है, फील्ड एक्सपेरिमेंट करोगे उससे पता लग जाएगा। क्योंकि फील्ड एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक कंट्रोल प्लॉट भी रखते हैं, एक कंट्रोल प्लॉट भी रखते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि अगर हम कुछ ना डालें इसमें तो ये आएगा। अगर हमने कुछ नहीं डाला और एक में हमने डाल दी चीज कोई, अगर दोनों की ग्रोथ एक सी आती है, ईल्ड एक सी आती है, इसका मतलब हमारी फर्टिलिटी ठीक है, हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है, डालने की जरूरत है या नहीं है वो तो अलग चीज होगी। अब सवाल आता है, मान लो डालना ही पड़ेगा हमें, हमें पता लग गया कि हमारी सोइल में डेफिशिएंसी है, तो हम कितना न्यूट्रिएंट डालें, उसमें क्या मात्रा होनी चाहिए। इवन सोइल टेस्ट से मैंने बता जरूर दिया आपको कि लेस देन दिस है, मीडियम है, लो है, हाई है, तो उसमें अप्लाई होना चाहिए, इतनी ईल्ड कम आती है। लेकिन वो रिकमेंडेशन उतनी वेरीफाइबल, उतनी ऑथेंटिक नहीं है जितनी ऑथेंटिक एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके हम बताते हैं। एग्रोनॉमी में हम लोग पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जहां तक एक्सपेरिमेंट फर्टिलिटी पे इसीलिए करते हैं कि उससे उस क्षेत्र के लिए, उस सोयल के लिए, उस फसल के लिए सही मात्रा में हम उर्वरक की मात्रा या न्यूट्रिएंट की मात्रा बता पाए, वही पर्पस होता है। तो वो बेस्ट तरीका होता है फर्टिलिटी को इवेलुएट करने का। हालांकि एक्सपेंसिव होता है, आप कितने एक्सपेरिमेंट करोगे, कितने फार्मर्स हैं हमारे, कितने फसलें उगाते हैं, कितना बड़ा, तो सब जगह ये एक्सपेरिमेंट नहीं होते। तो फिर लोग क्या करते हैं, वो जो एक्सटेंशन वाले होते हैं, हमारे एक्सटेंशन सिस्टम वाले, वो डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, दे गो फॉर डिमोन्स्ट्रेशन, कहीं कहीं दिखाते हैं कि भाई सल्फर डालिए आप, एक पट्टी में आपने बिना सल्फर के दिखा दिया, एक पट्टी में हमने सल्फर डाल दिया, तो वो दिखा देते देंगे कि मिट्टी में आपकी सल्फर की कमी थी, सल्फर की यहाँ रेस्पॉन्स आ रही है, सल्फर लगाने से आपकी पत्तियां हरी हो गई, सल्फर लगाने से ये हो गया, वो हो गया। तो उस तरह से फर्टिलिटी इवेलुएट की जाती है थ्रू डिमोन्स्ट्रेशन। लेकिन अब बहुत कम सॉइल टेस्टिंग लैब हैं जो आपका फील्ड में जो है प्लांट ग्रो करके और न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन देती। बीच में सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स आया था, उन्होंने इक्वेशन डेवलप कर ली थी, वो बहुत पुरानी इक्वेशन है, वो अब काम करें आज की तारीख में जरूरी नहीं है, क्योंकि सॉइल की नेचर भी चेंज हो जाती है ओवर ईयर्स, ओवर टाइम, फर्टिलाइजर की रेस्पॉन्स भी बदलती रहती है। तो वो जो इक्वेशन उपलब्ध है, रिग्रेशन इक्वेशंस, वो हो सकता है आज की तारीख में काम ना करे।
तो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फील्ड एक्सपेरिमेंट से भी सॉइल फर्टिलिटी इवेलुएट की जाती है. सो दिस इज यूजफुल फॉर कैलिब्रेशन ऑफ सॉइल टेस्ट एंड प्लांट एनालिसिस. सपोज सॉइल टेस्ट हमारे पास आ गया, फिर उससे हमें अगर न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन डेवलप करनी, तब हम फील्ड की एक्सपेरिमेंट करें. सॉइल टेस्ट आ गया हमारे पास, मान लो सॉइल में हमें पता लग गया कि 150 किलो नाइट्रोजन थी सॉइल में, जो अवेलेबल नाइट्रोजन. फिर हम देखेंगे कि प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग अमाउंट फर्टिलाइजर की हम डालेंगे. हम कहीं 60 किलो डालेंगे, कहीं 80 किलो, कहीं 120 किलो, 140 किलो, अलग अलग हम उसके लेवल लेंगे. फिर उस लेवल के उस सॉइल टेस्ट जो बेस है उसमें हम अप्लाई करके देखेंगे. ऐसे कोई सॉइल हमारी ऐसी हो सकती है जिसमें आपकी 100 किलो नाइट्रोजन हो, तो उसमें फर्टिलाइजर के थोड़े अलग लेवल डालेंगे, थोड़े ज्यादा डालेंगे. तो जो सॉइल टेस्ट आए हमारे, उनको हम एक्सपेरिमेंट से जो रिकमेंडेशन है फर्टिलाइजर की, उससे कोरिलेट कर सकते हैं. सो प्रोवाइड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए क्रॉप इन ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट एट ए गिवन यील्ड लेवल. इसमें कई बार हम यील्ड लेवल भी डिसाइड कर लेते हैं, इतना यील्ड लेवल चाहिए, तो वो बात की बात है. अभी हम सिर्फ ऑप्टिमम लेवल की बात कर रहे हैं. So amount of recommended nutrient will vary with crop, soil, environment and yield level. Yield level ज्यादा चाहिए तो थोड़ा न्यूट्रिएंट ज्यादा पड़ा, बट वो बात की बात है, अभी उस पर नहीं जा रहे हम. So what these field experiments do, they generate the information on soil nutrient supply. जो soil से supply है वो कितनी आ रही है, वो हमें कंट्रोल से पता लग जाती है, क्योंकि कंट्रोल में हमने कोई भी सोर्स नहीं डाला है. तो जितना भी न्यूट्रिएंट कंट्रोल प्लॉट में प्लांट के अंदर आएगा वो सोयल से ही तो आ रहा है. तो उससे हमें सोयल की सप्लाइंग कैपेसिटी पता लग जाती है कि सोयल इतना न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकती है. वैसे भी फ्रेंड्स हम बड़े आसानी से बैक कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर हमें ये पता हो कि हमारी मान लो 6 टन यील्ड है हमारी, 6 टन यील्ड के लिए हम कितना न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट करते हैं, कितना दाने में जाता है, कितना हमारा भूसे में जाता है. तो जैसे राइस के केस में मैं बता दे सकता हूँ, क्योंकि इस पर हम काम करते रहते हैं. मान लो 20 से 22 किलो नाइट्रोजन पर टन दाना. 1 टन अगर आपने दाना काटा और उस दाने से संबंधित जो भूसा है 1 टन में, उस भूसे और दाने को मिला के नाइट्रोजन करीब 20 से 22 किलो अपटेक होती है. तो अगर हमारी 6 टन यील्ड है, तो 6 टन यील्ड के लिए हमारा 6 दूनी 12, 120 किलो नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी सॉइल से. 120 किलो नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी सॉइल से. तो हमें अगर पता लग गया कंट्रोल ट्रीटमेंट से कि यार 60 किलो नाइट्रोजन तो हमारी वो सॉइल ही दे देती है, 60 किलो तो उस कंट्रोल प्लॉट से मिल जाती है, तो 60 किलो हम कम कर देंगे. अब बची हमारी 60 किलो. अब 60 किलो नाइट्रोजन, हमें ये भी पता है कि अगर हम 60 किलो नाइट्रोजन डालेंगे तो आधी तो नुकसान ही हो जाएगा, उसका लीचिंग हो जाएगा, वोलेटिलाइजेशन होगा, लॉसेस होंगे, ये होगा वो होगा. तो हमें फिर वो दुगनी करनी पड़ेगी, उसकी एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी. अगर 30% 35% एफिशिएंसी, तो 3 गुना करना पड़ेगा, 180 किलो डालना पड़ेगा. तो ऐसे भी हम कई बार जो है ना न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट का आइडिया ले लेते हैं कंट्रोल प्लॉट से. सोयल सप्लाइंग कैपेसिटी पता होगी, बाकी हमें फर्टिलाइजर से पूरी करनी मान लो, तो फर्टिलाइजर की अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी एफिशिएंसी को फिक्स करके. एफिशिएंसी फिक्स कैसे होती है, पास्ट एक्सपीरियंस या दूसरे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर हम ये मान लेते हैं कि इतनी रिकवरी जो है यूरिया की या फर्टिलाइजर की होगी. तो बहुत सारे तरीके हैं, हमें सिर्फ कई बार इसमें थिंकिंग देनी पड़ती है और हम अपनी रिकमेंडेशन फर्टिलाइजर की दे सकते हैं. However, because of the considerable expertise, effort and cost involved, they are not suitable for individual farmer. ये जो एक्सपेरिमेंट जो मैं बता रहा हूँ हर किसान के खेत पे नहीं किए जा सकते, ये सिर्फ रिसर्च स्टेशन पे किए जा सकते हैं. And these are used mainly by researcher for generating background data needed for making practical recommendation for the farmers. So this is the most useful aspect. Experiments carried out अंडर फील्ड कंडीशन बोथ एट रिसर्च स्टेशन एंड द फार्मर फील्ड, दोनों जगह हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. नेचुरली जो ग्रीन हाउस एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ लाभदायक नहीं होते. आप जो पोर्ट में स्टडी करते हैं, ग्रीन हाउस में करते हैं, एग्रोनॉमी का कोई भी बंदा, साइंटिस्ट, स्टूडेंट को कभी नहीं मानेगा कि पोर्ट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट या ग्रीन हाउस के रिजल्ट फील्ड एक्सपेरिमेंट में रेप्लिकेट किए जा सकते हैं या उनके लिए सही होते हैं. दे आर नेवर रिप्रेजेंटिंग फील्ड कंडीशंस. So
फिर हम दो तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, यही मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल टेस्ट प्लॉट एक्सपेरिमेंट, जहां हम कुछ भी नहीं डालते, किसानों को दिखाना है या कहीं ले जाना है बाहर अपनी टेक्नोलॉजी, तो एक पट्टी हमने बना दी कंट्रोल की, और एक पट्टी में हमने अपनी कोई प्रैक्टिस दिखा दी कि नाइट्रोजन एप्लीकेशन का ये रेट है, ये सही रेट है सॉइल के लिए। वो दूसरा कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें डोज के साथ सोर्स भी ले लेते हैं, दो तीन फैक्टर एक साथ ले लेते हैं, और उनको हम जब डिमोन्स्ट्रेट करते हैं या फील्ड एक्सपेरिमेंट के रूप में करते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट बन जाते हैं। आप समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे रेट और सोर्स ले लिया कि भाई अलग अलग रेट, मान लो दो तरह के हम फर्टिलाइजर डाल लें, तो उनके हो सकता है रेट अलग अलग हो, ऑप्टिमम रेट। जैसे हम मान लो सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, दोनों में फास्फोरस सोल्यूबल फॉर्म में है, लेकिन हम जानना चाहते हैं भाई डीएपी अच्छा फास्फोरस के लिए या आपके सिंगल सुपर फास्फेट अच्छा, तो दोनों ले सकते हैं। दोनों से सेम डोज हम फास्फोरस की देंगे और अलग अलग डोज भी देंगे। जैसे 20 किलो दोनों से दिया, 40 किलो दोनों सोर्स से दिया, 60 किलो दोनों। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि क्या इन सोर्सेस में कोई अंतर आता है डोज देने का। तो यहाँ दो फैक्टर हो गए, एक रेट हो गया, एक सोर्स हो गया। तो वो कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट में इस तरह की स्टडी की जाती है। अच्छा भी होता है, कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट हमारे रिसोर्सेज की सेविंग करते हैं, क्योंकि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट फिर उतने ही करने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स ठीक होते हैं। तो कंट्रोल टेस्ट प्लॉट आर सिंपलेस्ट फील्ड एक्सपेरिमेंट। यहाँ स्ट्रिप टेक्निक मैंने अभी आपको बता दिया, वही कंट्रोल टेस्ट है। यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज लाइकली टू बी डेफिशिएंट और नॉट। इसी तरह का बताता है, कुछ ज्यादा इससे पता लगता नहीं। जो कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स है, स्टडीज ऑफ न्यूट्रिएंट नीड्स, एनपीके, दो या तीन भी ले सकते हैं आप, टू इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट रेट्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम रेट, एंड फाइनली द कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट विद सेवरल न्यूट्रिएंट्स एंड अदर फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हम कंबाइन कर सकते हैं, और फिर हम रेस्पॉन्स कर्व्स बनाते हैं। रेस्पॉन्स कर्व्स जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोगों को शायद वहाँ ना पढ़ाते हो, ना पढ़ाया जाता हो, बट दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरे कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। आपको अगर कभी जरूरत हो, मैं ये नहीं कह रहा आप उनको सुनिए, उनको लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए, आपको कभी लगे कि आपको कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस और रेस्पॉन्स कर्व फिटिंग पे अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंडियन कंटेक्स्ट में हो, ठीक है, हमारे हिसाब से हो, तो उसके लिए आप एक बार मेरे लेक्चर जरूर देखना यूट्यूब पे। कभी आपको जरूरत पड़े, हो सकता है काम आ जाए आपको। उसमें तीन प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, और वैसे तो वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं उस पे, आप और वीडियो भी देख लेना, कुछ काम आ जाएंगे आपके। इसमें आपको सिर्फ इतना करना, यूट्यूब पे जाके दिनेश कुमार एग्रोनॉमी लिख देना, बस मेरा चैनल आ जाएगा। आप उसमें थोड़ा ढूंढने में मेहनत लगेगी, नीचे तक जाना या सर्च कर लेना। उसमें रेस्पॉन्स कर्व फिटिंग पे तीन वीडियो है, लंबे लंबे बड़े बड़े वीडियो हैं, उनको आप देख लेना। रेस्पॉन्स कर्व फिटिंग, जहां ये सब्जेक्ट आज खत्म हो रहा है, इसके आगे वो सब्जेक्ट शुरू होता है। इसमें जैसे हमने फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट के अलग अलग लेवल लिए, उनकी रेस्पॉन्स देखी, ईल्ड पे रेस्पॉन्स देखी, या ड्राई मैटर पे रेस्पॉन्स देखी, या प्लांट हाइट पे देखी, या किसी पे भी देखी। बहुत सारे वेरिएबल हम एग्रोनॉमी वाले इकट्ठे कर लेते हैं। सॉइल का डेटा हम लेते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट लेते हैं, कार्बन लेते हैं, वाटर के लेवल लेते हैं, बहुत चीजें हम सॉइल की भी मेजर करते हैं। रूट रूट की स्टडी भी कर लेते हैं कभी कभी अलग अलग ट्रीटमेंट में। एंड मेनी टाइम्स वी हैव डेटा ऑन द प्लांट्स आल्सो। उसकी हाइट क्या है, उसमें टिलर कितना निकला, उसमें बालियां कितनी आई, दाने कितने बने, सब चीजें करते हैं हम, बायोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन। फिर हम उनकी एनपीके एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ईल्ड करते हैं। तो ये तमाम वेरिएबल हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। इनसे बड़े अच्छे अच्छे ग्राफ, बड़े अच्छे अच्छे हम कोरिलेशन रिग्रेशन बना सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अपने डेटा से, और हमारे रिजल्ट बहुत बेहतर दिखने में लगेंगे, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लगेंगे। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, एक्सपेरिमेंट तो एक बार हो ही गया, सब कुछ हो गया। सिर्फ जो डेटा हमारा टेबल फॉर्म में आ गया, इवन जो फाइनल डेटा आ गया हमारे पास, सिर्फ उस डेटा को ही हैंडल करना है। उसी में एक्सेल में हो जाता है सारा काम। आपको किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी।
जो आप अगर वो लेक्चर देखोगे मेरे वाले, तो उसमें एक्सेल में सिखाया गया है, हेल्प भी है, सब कुछ है। अगर आप उनको देख के प्रैक्टिस करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड होगा आप में, तो वो आप रेस्पॉन्स कर्व फिटिंग को सीख सकते हैं। रेस्पॉन्स कर्व फिटिंग से हमें कंपैरेटिव इफेक्टिवनेस पता लग जाती है। कंपैरेटिव इफेक्टिवनेस हमारी फर्टिलाइजर की पता लग जाएगी। अलग अलग डोजों पे 2 फर्टिलाइजर यूज किए, अलग अलग डोजों पे हमने 2 वैरायटी लगाई या 3 वैरायटी लगाई, तीनों वैरायटी एक ही ग्राफ में आ जाएंगी। रिग्रेशन रेस्पॉन्स कर्व फिटिंग से तीनों वैरायटी का जो लाइन आती है, क्वाड्रेटिक लाइन आती है, वो एक ही उसमें आ जाती है। जैसे हम नाइट्रोजन अपटेक निकालते हैं इन ग्रेन, नाइट्रोजन अपटेक इन ड्राई मैटर, उसको हम फास्फोरस अपटेक से रिलेशन देख सकते हैं। उसकी रिलेशन फिर हम अपटेक की, फास्फोरस अपटेक की रिलेशन हम ईल्ड से कर सकते हैं, ग्रोथ से कर सकते हैं, फास्फोरस कंसंट्रेशन की अपटेक के साथ कर सकते हैं। लाखों चीजें हैं जो हम इससे कर सकते हैं, हम तो करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कभी उस ओर ध्यान ना गया हो आपका, तो आप उस तरफ ध्यान दीजिए। वो एक नया एडिशन होगा, आपका नया कंट्रीब्यूशन होगा आपके सिस्टम के लिए। रेस्पॉन्स कर्व फिटिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, पहले उसको पढ़िए, समझिए। ना समझ में आए वीडियो देख लीजिए, फिर भी समझ में आए तो मुझे क्वेश्चन भेज देना, आई कैन हेल्प यू उसमें। और एक गोमेज की किताब है, गोमेज एंड गोमेज, आपने सुना होगा, स्टैटिस्टिकल मेथड। उसमें एक चैप्टर है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। उस चैप्टर को आप पहले पढ़ लीजिए अगर इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट नहीं है तो आपका मन है, मैं तो कह ही सकता हूँ। उसकी बुक की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, वैसे महंगी मिलती है बाजार में। आप मुझे ईमेल लिख देना, जो भी बुक्स चाहिए इस तरह की, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो वो उसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस का फुल चैप्टर है। उस चैप्टर से पढ़ के पहले बेसिक नॉलेज हमारी क्लियर हो जाएगी, कितना इंपॉर्टेंट है वो हमारे एग्रोनॉमी वालों के लिए जो सॉइल फर्टिलिटी फर्टिलाइजर पे काम करते हैं। उसके बिना आपका काम अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आ आप प्रेजेंट। सो रेस्पॉन्स कर्व्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके आगे का आपको देखना है कि पहला तो ये है कि जैसे हमने फर्टिलाइजर की डोजेस लगाई और रेस्पेक्टिव डोज की हमने ईल्ड पता कर ली, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक रेस्पॉन्स कर्व फिट कर सकते हैं। फिट करके इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, उस इक्वेशन से फार्मूला होता है, उस फार्मूले से हम ऑप्टिमम डोज निकाल सकते हैं। इसके लिए फिर भी अगर आपको जरूरत हो तो मेरे पास 3-4 पावर पॉइंट भी है जिसमें सब चीजें, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तभी मैं दूंगा। ऐसे मैं अपने आप बल्क में नहीं दूंगा। अगर आपको सीखना पड़ना होगा, एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान लेना होगा, तो मैं वो सारे पावर पॉइंट एज सच दे दूंगा। कोई पीडीएफ भी नहीं बनाऊंगा, पीपीटी दे दूंगा सारे। लेकिन आपको मुझे लिखना पड़ेगा और इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं है मान लो तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके आगे की वो सब्जेक्ट पूरा करेगा यहाँ, मतलब हो ही नहीं सकता यहाँ वो पूरा 10-5 मिनट बचा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, फिर इसका भी टेस्ट होता है, वेदर दिस इक्वेशन इज जेन्युइनली क्वाड्रेटिक और नॉट। जब टेस्ट हो जाता है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, एफ टेस्ट से होता है, बड़ा सिंपल है। अभी आपको भारी लग रहा हो, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे इसको। फिर अगर इक्वेशन सिग्निफिकेंट है तब आप ऑप्टिमम डोज निकाल सकते हैं। इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एक्सेल निकाल देता है अपने आप। और इसका फार्मूला होता है ऑप्टिमम डोज का, y ऑप्टिमम डोज इक्वल टू q अपॉन p माइनस b अपॉन 2c। तो उसमें Q कॉस्ट होती है फर्टिलाइजर की, P प्राइस होता है, और B और C रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं जो इक्वेशन में आप डेवलप करते हैं। तो उससे आपकी ऑप्टिमम डोज निकल जाती है। तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन फर्टिलिटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में आपके फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। आपने सुना होगा इंडिया में भी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसका सेंटर भोपाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट आपको भी पढ़ाया गया होगा, या आप पढ़ाते होंगे, या कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा। तो इंडिया में लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट 1973 से स्टार्ट हुए। भोपाल में सेंटर है, देश में कम से कम इनके 20 कोऑर्डिनेटेड सेंटर है, जहां पे सिर्फ फर्टिलाइजर की टेस्टिंग करते हैं। 3 ट्रीटमेंट होते हैं इनके, एक तो आईएनएम का होता है, एक फर्टिलाइजर का होता है, एक ऑर्गेनिक का होता है।
एक आध और कोई बना लेता है, जिंक डाल देता है, कहीं सल्फर डाल देता है। तो ये ट्रीटमेंट 100 साल तो नहीं हो, ज्यादा झूठ हो जाएगा। 1973 से आप जोड़ लीजिए, जितना भी साल हुआ उतने साल, 50 साल से तो चल ही रहे होंगे। तो 50 साल से इंडिया में चल रहे हैं। आपको रोथमस्टेड एक्सपेरिमेंट पता होगा, वो भी मैन्योरल ट्रायल, हम लोग फर्टिलाइजर कह देते हैं, वो लोग बोलते हैं मैन्योरल, मैन्योर के ट्रायल है। जो रोथमस्टेड का ट्रायल है आज भी कंटिन्यू हो रहा है, वो 1843 में स्टार्ट हुआ, आपको पता होगा। सो दुनिया के कोने कोने में लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। वो भी हमारे तमाम तरह की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। वो तो 150-150 साल का डेटा रिपोर्ट करते हैं। अभी आया एक पेपर रोथमस्टेड रिसर्च से कि पता नहीं 200 साल हुए कितने हुए, 150 से ज्यादा हो गया, पौने 200 साल जब हुए तो उन्होंने सारी एनालिसिस करी फिर। तो ये फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नए नहीं है, दुनिया करती रही है, आगे भी होते रहेंगे। और ये हमारा फिनिश हो जाता है। आपके क्वेश्चंस, कमेंट्स, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। और मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर